Hello everyone. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Okay, just write your name in the chat box. Okay. So today, last topic from Java, that is exception handling. We are going to start, right? First of all, what is exception, everybody? This is very, very important and interesting topic again. As a tester also, somewhere whenever you are preparing automation script, and if you're getting any exception, like what is exception? Technically, exception is what? Whenever it is a kind of abnormal condition, and whenever any program got terminated because of exception, then you have to handle it. Okay. See, so as a tester also, whenever you are preparing any automation script, and if there are exceptions, guys, so definitely you guys need to handle it. But first of all, to handle exception, what is exception? How many different types of exceptions are there? And what are the handling solutions are there? This topic or this part, you need to understand. So today I'm going to start with exception. In Java programming, everything, it is in the form of object and the class, correct? What is exception? Technically, exception, it is a class available in Java programming language. There is a super class in Java, that is object class. Under object, you will get one, object got extended through the throwable. And through the throwable, you are able to see this exception class. So please understand, first of all, what is exception, why we need to handle it. Let's see. So in plain English language, exception is abnormal condition. Any condition which terminate your code or your execution of the program, that is called exception. In Java also, exception is abnormal scenario which will stop the execution of a current program. Whenever there is exception in the program, you are not able to continue with the execution, guys. And in technical word, exception is class in Java. So why we need to handle it? Obviously, if exception is there, you are not able to proceed. And that's the reason you need to handle this exception, guys. So there are variety of ways available to handle the exception. For that, you should understand the type of exception. So guys, exception handling, it is a way to handle runtime, compile time, any kind of error, any kind of arithmetic or IO exceptions, guys, whatever available in the program. So the main reason to handle exception is to maintain normal flow of the application, correct? So how exactly we are able to do that? First of all, let's understand the hierarchy. Exception class is coming from what? See guys, there is an object class available. Object class got extended by throwable. And in throwable, there are two child classes you can see. One is exception, another one is error. What is the difference between both exception and error? Most probably, what is happening? See, exception, it is what? Any abnormal condition. Whenever it occurs in the program, your program will generally stop and you have to handle it. But what is error? Error can be any internal issue. It can be any problem related to memory, related to resource, related to, you can see, virtual machine, anything. That is called error. And error are not recoverable. Normally, we are not able to directly handle the error. But yes, error is also important to understand, because in testing also, few classes are there, few methods are there which will throw such a kind of error. So I will be covering this assertion error. What is assertion error and where you will get it? So in general difference में आप explain कर सकते हो कि exception we are able to handle, but error we are not able to handle automatically. Remember, error mostly indicates some internal issues, some memory related issues, some resource related issues you can consider, then that is called error. But what is exception? Any abnormal condition that can be occur at runtime or maybe compile time, then that is called exception, which will not allow you to execute your code, or your program will terminate on that particular line, then that is called exception. So there are two categories, okay? One is compile time, another one is runtime. Compile time, mostly IO exception, SQL exception you can see. This comes under compile time. There are some
Other exceptions I will be showing you, right? Interrupted exceptions and all. This is again a part of, compile time exception. And what is runtime? Runtime means when you execute a program, after that, if you are getting any exception in the console, then that is called runtime exception. So arithmetic, null pointer, number format, all this comes under runtime category. So exactly compile time, runtime matlab kya hai? See, compile time means whenever you are writing a program and during the program, if you are getting an exception, that is called compile time. What is runtime? Runtime is called unchecked. Compile time is called checked. Runtime means those program or whenever you execute it in the console, after execution, if you are getting an exception, that is called runtime exception. And error is something different, Error is mostly irrecoverable, like out of memory error, some virtual machine error, some resource error, assertion error. So we guys are here to understand how to handle any exception if it is available in the code, and what's the solution to handle any type of exception. So today I will be creating a separate package to show you the demo. So everybody just focus. We have created so many packages. Now let me create one more, that is for exception handling. Okay, exception handling. And what is happening? Why I'm not getting source here? Source folder name is empty. Let's say src. Okay, let me just choose one more time. New and go to package. Yes, now I'm getting it. Let me write one more time. Exception handling. And let me click on finish. Done. And under this, I will be showing you first example for runtime exception. So everybody just focus, okay? I will be providing you multiple examples here to just focus. Now the first example, which is very, very simple. Let me design directly scanner class. I will be, accepting some data from the user. Scanner, SC, new, scanner. These techniques we have already covered, right? तो scanner के consider में आपको लिखना होगा system.in to accept input stream, to accept data from the user. Import scanner class from which package? Java.util package. Okay, I'll just do one thing. I'll ask the user to enter two numbers. Enter two numbers. Okay. Now, whatever user will enter, we have to store it somewhere in the variable in numbers. So I will be using integer number. Very good. SC dot which method? Next int method. Next line. Next int. No. Next line is for string. Okay. Next int. Then integer number 2. It is equal to one more time SC dot next int method. Remember. Okay. Now, this is a very simple program, right? Where we have read two information, two number from the user. What I need to do is, I just need to pass it to the operations, like arithmetic operations I will be doing. Consider this is the first addition is, and I'll do one thing without any function. I'm just printing that, right? So I will just maintain that operation within a bracket. It's like number 1 plus number 2, correct? So I have given this particular statement. I have written this addition statement. Let me copy and I will perform multiple operations. Let's see, this is all about subtraction. Let me write subtraction is, and yes, only the arithmetic operation need to change. Here I am writing suppose division is, and here only operator you have to change, number 1 divided by number 2. And last I will be writing for multiplication. Okay, multiplication is what? Number 1 into number 2. Fine. And finally, I will close that SC. Done. So my code is ready. Let's start. Let's execute it. See, this time I'm passing. Okay, it will ask you enter two number. Okay, fine. I will be writing 10 divided by 5. Okay, let's see. We are able to see the perfect answer, right? Addition is 15, subtraction is 5, and division 2, multiplication is 50. Everything you are getting properly. Okay,
Why this has happened? Because user has entered valid data. What if, example, one more time I'm executing the program and suppose आपके end user ने यहाँ पे कुछ data enter किया, like let's say 10 divided by 0. Mathematically, it is proven that you cannot divide any number by 0. If you write a code for it, immediately in the programming, you will get one exception, and that is called arithmetic exception. Divided by 0 exception. See this. If I run, what is happening? दो स्टेटमेंट रन हो गए, ठीक है. एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्सट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हाट यू कैन सी, you are getting exception on this line where you can see the exception name is arithmetic exception. This is an exception name. Technically in Java, it is a class. And what type of exception it is? So let me tell you, it is a runtime. क्यों? Because आपने प्रोग्राम को जब लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं था कोड में, जब रन किया तो you are able to see this. And what is a exception message? तो कोलन के बाद जो आता है ना, that is called message, guys. It's a divide by 0 exception. Got it? How you will understand कि कौन से line पे exception मिला? तो next line read करो. Runtime exception, it is my class name. Under this class, line number 17. See, on line number 17, I'm getting this exception, arithmetic exception. But can you see the definition of exception is what? Whenever there is exception in the program, your program will terminate on that same line. Program will not continue execution with the next statement. That means what? Are you able to see the result for multiplication here? No, right? You are not able to see the result for multiplication. क्यों नहीं दिख रहा है? Because आपका exception है program में. So whenever exception occur, the next statement it will not execute, guys. तो पहला example clear है. What is arithmetic exception? What is runtime exception? Yes, ma'am. Right? Okay, this is one demo only. Let me comment. I will be showing you multiple examples. See, this is first example that I have covered or that I have just explained, which is called arithmetic. Okay, what else? Suppose I'm writing one more. See, one more time I'm declaring scanner sc new again scanner system.in. Everybody just focus. Now suppose I will be writing one message to the user. Enter number between, okay, 0 to 4 or 0 to 5, whatever it is. ठीक है, 0 to 4 लेते हैं. Okay. Now this is a number or it is nothing but I will say index. Okay. तो index मतलब number ही है, integer है. So let me take with the index variable. Okay. It's sc. Next int is a method which will read the data in the form of integer. Done. And what I'm going to do, I will declare one integer array also. Everybody. This is what type of array? Single dimensional array. It's a literal way. जहाँ पे मैं directly क्या करूँगी? Constant value को declare करूँगी. So how many elements I'm having in my array? Total 5. 5. Array index always start with 0. It's a static structure. So 0 to what is a, if I'm having a size 5 for an array, then index value will be 0 to 4 na? So yes. I have given the same message to the user, enter index between 0 to 4. And जो भी index user enter करेगा, you should get the result from the array for that particular index. So I'll be writing, okay, fine, array of index को print करो. Very simple. ठीक है? Okay, the code is ready. Array of index को हम यहाँ पे क्या करेंगे? Print करेंगे. And let me use close method also. Let's see what happens. This time, if user has entered valid index, let's say user has entered 3, definitely what the integer value user will get? 40. 40. Very good. So जो index pass करोगे, user will able to see the result. But suppose if any user, guys, user can be technical person, user can be non-technical person, right? अगर कोई user है and user is using this application and user got a message कि fine कोई index है या कोई number है enter करना है, okay fine. But if user has entered something wrong and if user is getting this kind of red color lines, will that user understand what is this?
अगर वो टेक्निकल पर्सन नहीं है तो उसको समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज दिस, व्हाई आई एम गेटिंग रेड कलर लाइंस. इफ आई एम नॉट अ जावा डेवलपर और टेस्टर, देन हाउ आई विल अंडरस्टैंड कि क्या लिखा है ना. एक नॉर्मल यूजर कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. So what is exception handling? We are getting exception, that's completely fine. Why we are getting and which exception we are getting? Array index out of bounds exception, because index value is wrong. है ना? Array का size है 5 and you are asking for index 6. So index 6 is out of for 5. Can you see bound or length 5? Everybody clear the point? But why Yes. we need to handle it ये भी समझो. अगर यही scenario कोई user ने use किया, and if user is able to see this kind of messages, how that user will understand कि what to do next step? And for that developer responsibility क्या होता है कि अगर कोई exception है तो इसको handle करो. तो handle करना मतलब you will ask a user to enter one more time different index than this particular wrong index. Something meaningful message you can provide to the user so that user will understand कि okay fine application में क्या problem है and कैसे मैं इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता हूँ. गॉट द पॉइंट. जैसे अगर आपने देखा होगा कि whenever you are, suppose you are logging in YouTube or maybe Facebook, and if you enter wrong username or password, what will happen? क्या application crash होता है? नहीं ना. What you will get? You will get some meaningful messages from the application. Exactly. Please enter a valid username and password, or your username or password may be wrong. Are you getting my point? जब मैसेजेस आते हैं एप्लीकेशन से तभी समझ में आएगा ना कि ओके फाइन मैंने कुछ तो भी गलत एंटर किया है इसका मतलब, राइट. दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग. whenever user will perform any wrong step and if program will terminate on that point, so it should not terminate. You should get some meaningful message so that user can continue and proceed from that particular step, and that is called exception handling. तो ओके फाइन, यहाँ पे अब एक्सेप्शन आता है, राइट. कौन से लाइन पे मिला? लाइन नंबर 31. ओके, इफ यू सी दिस इज द लाइन. Which exception I'm getting? Array index out of bound exception. So this is again one more example for runtime exception. Point is clear? Right? Yes, ma'am. Okay, let's consider what I'm going to do is, this is my class, right? Runtime exception. This is my class name. Suppose I'm going to declare here integer x is equal to 100. Some variable I have declared. But what I want to do is, I want to use this variable, or maybe I want to update this variable. Okay, whatever data it is, I want to update. So mostly हम update कैसे करेंगे? See, if you want to access anything from that class, you need an object. Correct? Now this time, let me comment. Yeah, I have commented. Let me show you. Then I am going to create an object first. Let's say R1, it is equal to new. One more time, constructor. And how we can call the data? See, I can call in this way, na? R1 dot X. Correct? See, if you run, definitely you will able to see the result. No problem. आपको मिलेगा 100 is a result. But before executing it, let's see, my R1 is pointing to null. What will happen? Which exception you will get, and on which line you will get the exception? Mm-hmm. 11. On line number 11, you will get exception. No. Line number Okay, 12. which exception? Which exception you will get? अगर कोई ऑब्जेक्ट नल होता है ना गाइस, तो आपको मिलेगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन. रिमेंबर, वेरी फेमस एक्सेप्शन. दिस यू विल फॉलो इन ऑटोमेशन आल्सो. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट योर ड्राइवर इज नल. उसी पॉइंट पे समझ लो कि ड्राइवर नल है, मतलब क्या है? मे बी आपका वेब ड्राइवर का जो ऑब्जेक्ट है वो नल है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो एक्सेप्शन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड सी ऑन लाइन नंबर 12 यू विल गेट एक्सेप्शन गाइस. Because अगर ऑब्जेक्ट नल है तो हाउ यू आर एबल टू access any information from that null object? See what I'm getting? Null pointer exception cannot read X field. Why? Because R1 is null. Are you getting my point? आप X को read नहीं कर सकते लाइन नंबर 12 पे. क्यों?
बिकॉज आपका R1 ऑब्जेक्ट जो है वो है null. तो कैन यू सी ऑन लाइन नंबर 12 you will get this exception, null pointer exception. First point is clear. What is null pointer exception? Yes, ma'am. So whenever object is null, you guys are able to see this kind of exception. Okay, let me comment. This is also runtime exception, guys. Chalo, we have taken one more example. This example we have already covered in the last session. I mean, initial session of the Java. Let me show you. Suppose I'm declaring one string S1, it is equal to, in the double quote, I'm writing some 1010, fine. What type of data it is now? 1010, it is number? Integer. Integer. It's integer. Integer. Okay, so this data is integer or string? And now it is a string because it is in String. double quoted. Exactly. This is string because it is in double quote and we have declared as a string. But suppose I want to convert, I can understand, okay, this is a number. तो मुझे इसको convert करना है एक int type में. तो कैसे convert करेंगे? What is the rule? Typecasting. Casting. Okay, but typecasting कैसे करोगे? Using which technique? क्या मैं यहाँ पे integer लिखूं क्या? ऐसे करूं क्या मैं integer लिखूं यहाँ पे bracket में? हो जाएगा क्या? Integer is equal to int, madam. No. Guys, this is the concept of wrapper class. If you remember, string is a class. Class है मतलब S1 object है. अगर S1 object है, I mean reference variable है, तो इस object को convert करने के लिए object to primitive, मतलब we need a wrapper class. Here you are going to use integer wrapper class. Integer का कौन सा method use करोगे conversion करने के लिए? Parse method. Remember, dot parse. Parsing. पार्स क्या? पार्स इंटीजर. जहां पे स्ट्रिंग पास करो ये रिटर्न करेगा प्रिमिटिव. तो मैंने पास किया S1 स्ट्रिंग, करेक्ट. अब ये S1 स्ट्रिंग जो भी डेटा है मुझे मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर. नाउ आई कैन डिक्लेयर दिस इज अ नंबर, करेक्ट. ओके, दैट्स फाइन. एंड नाउ हियर यू आर एबल टू प्रिंट दैट नंबर. सी, if I execute it this time, definitely you will able to see, in fact, number plus if you add 10 here, so you will get result what? 1020. 20, right? Okay, guys, just a minute, just a minute. Okay, so yes, got the same answer. 1020, right? Okay, but what if I add something here? Will this work? This time also I'll get the same result? No. This time you will get one exception. Do you remember which exception you will get on which line you will get? Guys, ये याद रखो, you will get number format exception. ये मैंने बताया था जब हमने ये टॉपिक कवर किया था. If you notice, see, if I execute it, see the result. Again, I'm getting number format exception on which line?
line number 16. Can you see why this exception is coming? Because जब आप इसको convert करोगे तब ये string नहीं है ना. I mean, this is not a complete number. Yes or no? This time, this number must be there, which should be convert in the integer, guys. अब यहाँ पे number के साथ characters भी है, मतलब string भी है. तो इस number को आप integer में full fledged convert नहीं कर सकते. And that's the reason you are getting runtime exception, number format exception. Are you clear? So these are some examples of what? Runtime exception. Remember. ये जितने भी exception मैंने आपको show किए, all these are called runtime exception. So this is not compile time. Let me first cover what is compile time then, and then we will see how to handle. So everybody focus. I will be creating one more class just to show you what is compile time. Okay, compile time exception. Just a minute. Up compile time, definitely you have to handle it for one more, I mean, for every example. So let me just cover a very basic compile time exception. There are so many. You will get IO exception, file not found exception. In fact, you will get interrupted exception, right? So yes, let's see. First example, suppose I'm writing a very simple statement. Program starts. Okay? Yeah, program starts. And one more statement I just want to write. See, copy. And if I write here, program ends. Okay. Now just observe. If I execute, it will run quickly. है ना? देखो. You will get both messages quickly. Program start, program end. But Java has one more feature, guys. Okay. Java also support multi-threading. Thread मतलब process. Okay. अगर at a time दो प्रोसेस को आपको एक साथ एग्जीक्यूट नहीं करना है, one process you want to execute after some break, after some time, then you can use a thread concept here. So in Java there is a thread class. You can just write thread. Okay. Thread dot, there is one method, sleep method, and here you can pass that timeout. That what exactly time you just want to pause or interrupt this particular process. So basically thread dot sleep एक method है. अगर आपने इसको यूज किया तो थोड़ी देर के लिए जितना टाइम आप प्रोवाइड करोगे उतने टाइम के लिए ये पूरा प्रोसेस आपका क्या होगा? पॉज होगा. इट विल नॉट स्टॉप, इट विल जस्ट पॉज. मोस्ट पॉपुलरली ये मेथड हम फॉलो कर सकते हैं सेलेनियम में भी, बट देयर इज अ रूल. यू हैव टू प्रोवाइड अ थ्रेड डॉट स्लीप टाइम आउट मैक्स टू मैक्स 5 सेकेंड गाइस. ओके, 5 सेकेंड से ज्यादा टाइम प्रोवाइड करना नहीं है. एंड वॉट एवर टाइम यू विल बी राइटिंग, that is in the form of millisecond. मतलब 1 second, it is equal to 1000 millisecond. So here if I want to provide some little bit pause in between two statement, I will just provide in this way. This time I have written 3000. इसका मतलब कितने सेकंड मैंने पास किया है? 3 seconds. Okay. But why I'm getting this red color line below that particular thread? See, thread is a class, predefined class है Java के पास. Okay. उसका एक static method available है. Whenever you are calling any method directly from the class name, तो ये method का type क्या होता है? Static. Remember, this is a rule. But now why I'm getting error? Because internally, whenever you are using this predefined class, it will throw one exception, guys. And this is called compile time exception. It will throw interrupted exception. So let me show you. If you keep your mouse pointer now, immediately you are able to see that unhandled exception type interrupted exception. But now one more thing, how you can handle it. तो Java में run time हो, compile time हो, कोई भी exception pattern हो, how you will handle it? There are few handling solutions, handling keywords are available. First, to handle exception, either you can follow try, catch, block. Okay, what is this? Try, catch, block. You can follow. Either you can follow throws keyword. There is one keyword. This you can follow. Either you can follow. Okay, let me tell you. For handling, two are valid. Only these two solutions are valid.
either you can throw that exception or you can handle it using try catch. So generally runtime exceptions agar hoga, so we can follow try catch. Remember, generally compile time exception होगा तो आप डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो थ्रोज. व्हाट दिस थ्रोज मींस, थ्रोज का एक रूल है गाइस, जहां पे मतलब सपोज आई हैव रिटर्न m1 एज अ मेथड, ठीक है, विद इन m1 सपोज देयर इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज थ्रोइंग सम एक्सेप्शन, तो वेयर यू आर गोइंग टू डिक्लेयर इट. थ्रोज हमेशा आप डिक्लेयर करते हो मेथड के साथ. जो भी मेथड है, जिस मेथड में एक्सेप्शन आ रहा है, उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए you have to throw that exception with method signature. So here you are going to write m1 throws xyz exception. Are you getting my point? इसका मतलब आप बस throws करोगे तो who will handle it? Generally compile time exception will be handled by JVM guys. Remember, Java virtual machine. How it will handle? See, whenever you are calling or throwing this particular exception to the method will called by the main method and main method will be called by the JVM. So automatically compile time exception will be handled internally by the JVM. So throws is a beautiful solution for that. You can directly throws and then the method has to handle it, okay, internally. But runtime we are able to achieve using try catch. What is try catch? I will cover, but let's talk first throws. And there is a one more beauty. Throws can throw one exception or multiple exception at a time. तो आपको अलग अलग लाइन पे स्टेटमेंट लिखना नहीं पड़ेगा, आप एक ही मेथड में मल्टीपल एक्सेप्शन को भी हैंडल कर सकते हो, राइट? बट सी हाउ वी कैन डू दैट. तो आइदर इफ यू नो द एक्सेप्शन डायरेक्टली राइट हियर, otherwise you are using anyways Eclipse editor, so you have this beauty that you can just keep your mouse pointer and see you are getting the option. Same exception you can handle using try catch also, using throws also. I will be covering both part, but the general practice and the good solution is what? If you are having any check exception, matlab compile time exception, to use karo directly throws declaration. See, whenever I'm asking to throw, see the hierarchy. What is this? Guys, it's a parent-child relation. Your actual exception is interrupted exception, which is coming because of this slip method, but it is a child for exception class. Exception is a child for throwable class. Got this hierarchy? And throwable is a class coming from object. It is a child for object class. तो either आप parent exception को throw करो और directly वो same exception को throw करो. It's up to you. Currently, I'm throwing just interrupted exception. I'm not using any parent, right? What will happen this time? See, error gone because we have handled it. I mean, internally we are throwing it, and who is going to handle it? JVM. Now let's see. If I execute, what will happen? When you run it, can you see after 3 seconds, you are able to see the next message? है ना? Pause हुआ. मतलब थोड़ी देर के लिए प्रोसेस को पॉज अगर करना है ना, तो आप ये मेथड को यूज करोगे. थ्रेड डॉट स्लिप. थ्रेड इज अ क्लास, स्लिप इज अ मेथड. वन मोर टाइम, सी द रिजल्ट. Program start. After 3 seconds, it will execute. Program ends. And this is called like, one exception, interrupted exception we are getting at the time of compilation. So it is a compile time exception basically. Let me show you some more examples so that you will understand. So let me just comment it. अब आते हैं second exception के पास. Yes, anyone wants to ask anything? Okay. Let's see, Java में there is a file class. Anyways, there are so many classes are available, but थोड़ा सा observe करो. Okay, what is a file class? तो एग्जाम्पल कोई फाइल है, अगर आपको कोई फाइल को प्रिपेयर करना है, फाइल से डेटा को रीड करना है, तो वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ क्लास. ओके, so this is a file class. Suppose I'm writing f1, it is equal to new, and this is the file. Basically, in the file constructor, okay, in the file constructor, you guys are able to pass, path of that file. मतलब यहाँ पे हम क्या डिक्लेयर करेंगे? Path of file. Do not worry, ये टॉपिक हम कवर अप करेंगे डायरेक्टली इन सेलेनियम. How you can,
go through the file, how you can read the data from the file. Okay, so just observe. Just now, for example, the file is a predefined class coming from java.io package. So let me just import it. See, it is coming from java.io package. जब इस क्लास को यूज करोगे तो यहाँ पे आप देते हो path of that file कि where the file it is available in your machine, in your system. Okay. बट इसको रीड करने के लिए हम एक और क्लास यूज करते हैं, फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास. रिमेंबर, फाइल इनपुट स्ट्रीम. File input stream fs it is equal to new, and I have to just one more time define file input stream, and in the constructor of this class you have to pass f1 guys. Fine, मतलब जो फाइल है उस पाथ को यहाँ पे पास करो. Now let me import this class from the same package java.io package. But can you see, even though I have imported it properly, still I'm getting one error. Basically, internally this file input stream will throw one exception that is called file not found exception. What if tomorrow अगर आपने गलत पाथ दिया तो अगर आपने गलत पाथ दिया तो जावा आपको ऑटोमेटिक एक्सेप्शन देगा, file not found exception. Got the point? So you have to handle it, and this is again example of compile time guys. तो compile time इसको handle कैसे करोगे? Just go for it and just write or throw this particular exception. Can you see? At a time, now you are able to throw two different exception, because throws है ना, तो multiple exception at a time आप throw कर सकते हो, कोई problem नहीं है. And this time I'm throwing file not found exception. Got the point? ये भी compile time है. चलो एक और point. Java का एक और special class है properties. I will be covering this part in Selenium. तो property file को कैसे prepare करोगे, property file से object को कैसे read करोगे, ये टॉपिक हम टेस्टng फ्रेमवर्क में कवर अप करेंगे. बट दिस इज अ क्लास विच इज कमिंग फ्रॉम जावा. रिमेंबर, तो प्रॉपर्टीज मैंने बस डिक्लेयर किया p1 न्यू, एंड वन मोर टाइम आई एम राइटिंग प्रॉपर्टीज. तो ये जो क्लास है ये आपको मिलेगा java.util पैकेज में. इंपोर्ट करो. तो इस क्लास का इंपॉर्टेंस ये है कि कोई ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन अगर आपको रीड करना है, सो फाइल वी कैन फॉलो फॉर नॉर्मल एनी टेक्स्ट फाइल, एनी काइंड ऑफ फाइल गाइस. बट द पॉइंट इज कि अगर कोई फाइल स्पेशल है जहाँ पे पूरा प्रॉपर्टीज का इंफॉर्मेशन है, इफ यू वांट टू रीड इट, तो हम ये स्पेशल क्लास को यूज करेंगे. बट इस क्लास में एक मेथड है p1.load मेथड. रिमेंबर, वन मोर टाइम, p1.load मेथड. And in the load method you have to pass that input stream. कौन से फाइल को रीड करना है वो फाइल का स्ट्रीम पास करना होता है. But internally this load method also throwing one exception. It will throw IO exception. So IO exception, it is again a compile time exception guys. So you have to handle it. See, आप directly throws कीवर्ड से उसको डिक्लेयर करो and see you are able to handle IO exception. What is happening? IO exception ये पेरेंट है फाइल नॉट फाउंड के लिए. दैट इज द रीजन यू कैन सी करंटली यू आर एबल टू ऑब्जर्व ओनली 2. अगर आपको कोई भी एक्सेप्शन को डिक्लेयर करना नहीं है, कंसीडर आई डोंट वांट टू डिक्लेयर दैट इंटरप्टेड, फाइल नॉट फाउंड और आईओ एक्सेप्शन, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली पेरेंट क्लास को भी लिख सकते हो एक्सेप्शन क्लास. ऑल द एक्सेप्शंस ऑटोमेटिकली गेट हैंडल्ड बाय द जेवीएम. ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इनहेरिटेंस बेसिकली वी कैन फॉलो. तो फाइल नॉट फाउंड, आईओ एक्सेप्शन, इंटरप्टेड, सब कोई चाइल्ड है ना एक्सेप्शन क्लास का. एक्सेप्शन इज अ मेन क्लास, रन टाइम एंड पेरेंट एंड चाइल्ड के लिए भी, आई मीन कंपाइल के लिए भी. एंड दैट्स द रीजन आइदर यू कैन डिक्लेयर एक्सेप्शन और यू कैन डिक्लेयर दैट इंडिपेंडेंट क्लास, एंड दिस इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एक्सेप्शन. तो मोस्ट प्रोबेबली जनरली हम कंपाइल टाइम एक्सेप्शन अगर कोई आता है ना तो हम इसको डायरेक्ट हैंडल करते हैं यूजिंग यू नो थ्रोज कीवर्ड. जैसे कि अगर आपको याद है तो हमने ये भी मेथड देखा था, system dot in dot in dot read method. And whenever you are using read method, this method also throw one exception. Let me remove exception. Can you see this? Okay, अगर मैंने throws को भी remove किया तो can you see this? Now you are getting all exceptions, right? देखो read method कौन सा exception throw करेगा? IO exception. Load method same IO exception. This method file not found. अब सबको इंडिपेंडेंटली लिखना है. व्हाट वी कैन डू, आइदर इंडिपेंडेंटली लिखो और जस्ट लिखो थ्रोस
एक्सेप्शन, ऑटोमेटिकली इट विल हैंडल ना. पहले एरर था बट अब हैंडल हुआ, क्यों? बिकॉज हमने थ्रोस किया. So compile time exception will be handled through JVM, and that is possible with the help of throws keyword. Got the point? तो compile time handle करने के लिए throws keyword कैसे यूज करोगे, समझ में आया सबको? Yes, ma'am. तो मोस्टली compile time exception handle करना it's a nice technique because directly आप इसको throws करोगे. But today let's understand what is try catch. Every time only throwing the exception, that means you are just ignoring it. Basically you are asking someone else to complete your task, something like that. तो better होगा कि आप उसको try catch से handle करो. Yes, compile time also you are able to handle using try catch. How to do that and what is try catch, पहले understand करो. तो एक simple concept है. There are two blocks available. First is a try block. Try block means a statement which will throw exception. You can maintain here. जो भी आपके प्रोग्राम का एक्सेप्शन वाला स्टेटमेंट है ना, वो आप यहाँ पे मेंटेन करोगे. एंड उसको कैसे हैंडल करना है, दैट यू कैन मेंटेन इन द कैच ब्लॉक. तो कैच ब्लॉक में व्हाई वी आर गेटिंग दिस ब्रैकेट, सी इन कैच ब्लॉक आई विल जस्ट राइट हैंडलिंग सॉल्यूशन, रिमेंबर. बट व्हाट वी नीड टू मेंटेन इन अ ब्रैकेट. अब एग्जांपल, if you know that this statement throwing which exception, then that class name you can maintain here, exception and its object. देखो every exception in Java it is a class, guys. तो class name with any object reference variable you can maintain. अब इसका फायदा क्या है, अगर आपको मैसेज, यूजर को मैसेज प्रिंट करके बताना है कि what exception you will get, तो आप डायरेक्टली e डॉट that get message मेथड को यूज कर सकते हो. that will get you the exception message. are you getting my point? print stack trace, exactly अगर आपको क्या करना है, अगर आपको टेस्ट करना है कि where exception is coming, print stack trace ये मेथड को यूज करो, ये आपको बताएगा कि कौन से क्लास का ये एक्सेप्शन पार्ट है. तो you have to declare in this way your exception. Let's see how you can use it. So I'll show you now runtime exception handling. जैसे कि हमने यहाँ पे बहुत सारे exception देखे दिलाओ. Let's see one by one how you are able to handle it. तो guys suppose सबसे पहले runtime exception में null pointer मुझे handle करना है. You guys are aware कि this is a statement which is throwing us exception. तो क्या करेंगे? Let's maintain it in the try block. How you will write? You have to just write try. You can just use shortcut control space. ये आपको बताएगा पूरा syntax. Can you see? There are two blocks, two different blocks are available. Try catch and try finally. Finally is totally different. I will be covering separate demo on the same. Please wait. Just focus on try catch only. Either you can take a ready-made syntax, no problem. And can you see what is the syntax? See, now you have to write this statement under a try block. Everybody focus. ये statement हम maintain करेंगे try block में, and see what is written here. To do handle exception आप यहाँ पे लिखोगे. Handle करना मतलब user को meaningful message provide करना. So I have to write here for a user. Okay, fine. Object of class is null. I will say check object. ठीक है, अभी के लिए मैंने यूजर के लिए दिया एक सिंपल मैसेज, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज नल, चेक ऑब्जेक्ट, दैट्स इट. तो गाइस दिस इज अ ट्राई कैच ब्लॉक. इसका मतलब जब आप प्रोग्राम को रन करोगे एंड इफ दिस स्टेटमेंट इज थ्रोइंग एन एक्सेप्शन, it will never shows you any red color lines now. It will directly come inside a catch block and it will show you this message. Are you getting my point? तो एग्जाम्पल अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, मैं इसको कमेंट करती हूँ, अभी के लिए 3 स्टेटमेंट को कमेंट करती हूँ. जस्ट ऑब्जर्व. इफ आई डोंट write a try catch and if I run, what is happening? You are getting message now. See, null pointer exception and something is written, x you cannot call because r1 is null. Okay, fine. But now
if I just maintain try catch, see how the exception is handling. Exception get handled through your meaningful message. So run it. Can you see now you are able to see any red color lines? No, na? अब यूजर को एक मीनिंगफुल मैसेज मिलेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज नल. प्लीज चेक ऑब्जेक्ट, दैट्स इट. एंड दिस इज द वे यू हैव हैंडल नल पॉइंटर एक्सेप्शन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो वन मोर टाइम, व्हाट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूजर कि मे बी उसने कुछ गलत एंट्री किया होगा या ऑब्जेक्ट अगर उसका नल होगा तो यूजर विल चेक द ऑब्जेक्ट. यूजर उस ऑब्जेक्ट को सॉल्व करेगा, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. जैसे कि आप कंसिडर करो कि यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करना है. Now user will enter correct username and password. And if this work, so now tell me what will happen if object is not null this time. What will happen? Are you able to see this message? Object of class is null. No. No. This time try block will execute only that particular statement, and you guys are able to see the correct result, that is 100. You will not get any exception, guys. Not get any handling solution also. मतलब ये समझ लो कि अगर एक्सेप्शन है तो कैच ब्लॉक रन होगा, एक्सेप्शन नहीं है तो यू विल गेट द रिजल्ट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट सच में नल है तो एक्सेप्शन थ्रो होगा नहीं. इस बार आपको हैंडलिंग सॉल्यूशन मिलेगा. यू विल नॉट एबल टू सी एक्स इज 100. सी वन मोर टाइम आई एम एग्जीक्यूटिंग, आई एम गेटिंग हैंडलिंग सॉल्यूशन. मतलब वहां पे एक्सेप्शन है एंड उसको हमने हैंडल किया है विद दिस मैसेज. गॉट द पॉइंट? So try block will explain like what exception it is, just maintain here, and catch will handle that. अब देखो E, what is this object beauty? If you want to print, let's say E dot, there are few methods available. If I just follow get message, तो ये मुझे बताएगा exact message. देखो कि अगर exception है तो वो कौन सा exception है. So what message I am getting? See, after read I am getting that message that field X because you cannot, object cannot read field X because R1 is null. तो वो जो मैसेज था वो मैसेज आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो. अगर आपने हैंडलिंग सॉल्यूशन नहीं दिया एंड अगर आपने डायरेक्टली लिखा ओके फाइन E डॉट, लेट्स से देयर इज वन मेथड अवेलेबल प्रिंट स्टैक ट्रेस, करेक्ट? यू कैन जस्ट कॉल दिस मेथड एंड सी व्हाट इज हैपनिंग. अभी आपको पूरा प्रिंट करके देगा कि व्हाट एक्सेप्शन इट इज. अगेन यू आर एबल टू सी दैट रेड कलर स्टेटमेंट गाइस, इट इज नल पॉइंटर एक्सेप्शन एंड इट इज कमिंग ऑन दिस लाइन. तो मोस्टली ये ऑब्जेक्ट के थ्रू आइदर यू आर एबल टू ट्रैक दैट पर्टिकुलर एक्सेप्शन और यू आर एबल टू सिंपल गेट द मैसेज व्हाटएवर इट इज कमिंग फ्रॉम दैट एक्सेप्शन. ठीक है, चलो अब इसके बारे में बताओ मुझे कैसे हैंडल करोगे. हाउ यू विल हैंडल दिस एक्सेप्शन. On which line it is coming? This line, right? Line number 24. तो अभी मैं क्या करूंगी? I will just maintain here try. Manually लिखोगे तो ऐसे लिखना है. This statement to be keep inside a try, but try कभी एक अकेला नहीं होता. With the try you have to enter catch. Exactly. तो यहाँ पे लिखेंगे catch. Manually लिखते हैं, right? Now if you notice, this time we are getting number format ना, तो we can directly write. तो मैंने पहले एग्जांपल में पेरेंट लिया था, राइट? अब हम पेरेंट नहीं लेंगे, इंडिपेंडेंट एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे. सो यू कैन जस्ट राइट नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन एनी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस. ओके, दैट्स फाइन. एंड देन हियर व्हाट यू कैन डू, यू कैन प्रिंट और प्रोवाइड सम मीनिंगफुल मैसेज. ओके, तो यहाँ पे मुझे बताना होगा कि स्ट्रिंग कंटेन्स number with character. Okay, so I will say, or instead of this I will say input is not parsable. Input is not parsable मतलब convertible नहीं है. आप ऐसे भी लिख सकते हो, right? If you want to print that message you can write okay fine E dot, not E, this time N dot get message. ठीक है, but why I am getting error on line number 30? कौन बताएगा? Why I'm getting error on number? Where is my number? It is available in the try block ना. अगर try block का कोई पार्ट है गाइस तो आपको ये स्टेटमेंट कहाँ पे मेंटेन करना होगा? It is inside a try block only. Try block. ठीक है, अब क्या होगा देखो, अब एक और रूल.
This time, suppose I'm having normal number 1010. What will be the output of this code? Will it run catch block? No. No. Because यहाँ पे कोई exception throw नहीं होगा तो catch block run नहीं होगा तो आंसर क्या होगा? System out statement number plus 10 मतलब 1020. 1020. Exactly. Let's see. Okay, I'll do one thing. मैं थोड़ा separation करती हूँ हर एक exception में. ठीक है, अब इसको रन करते हैं. Definitely आंसर मिलेगा 1020. Can you see 1020? Okay. But suppose I'm adding some data here, which is wrong data. This time what will happen? कौन से लाइन पे कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? लाइन नंबर 25 पे होगा या लाइन नंबर 26 के बाद होगा? What do you think? 26 में होगा। के बाद 26 के बाद होगा, श्योर? यस मैम अरे एक मिनट. ये 26 के बाद होगा ही नहीं. 26 वाला स्टेटमेंट बेसिकली यहाँ पे रन ही नहीं होगा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि अगर ये वाला स्टेटमेंट आपका एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो गाइस द पॉइंट वेयर एक्सेप्शन गॉट थ्रो इट विल डायरेक्टली कम इनसाइड अ कैच. इट विल नॉट एग्जीक्यूट लाइन नंबर 26. इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द रूल? अगर हम ट्राई में देखो, एवरीबॉडी, दिस काइंड ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन पीपल विल आस्क यू. वन स्टेटमेंट है, टू स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट है, ठीक है, and one statement and there is a catch available and some statement is there. Fine. If one statement, first statement is throwing exception, will this two and third will run? No. अगर यहाँ पे exception आता है, program will directly jump to the catch block and ये solution आपको मिलेगा. It will not execute after that. Whatever statement you have maintained, it will not execute that statement. Got the point? तो second number, third number execute नहीं होगा and that's the reason. यहाँ पे अगर आपने notice किया in this program, so what the output will be? This time you will able to see this message. Input is not parsable and then you will get the message. See? Now I'm getting catch block. Is this concept clear? तो अगर आपका इनपुट सही है तो आंसर मिलेगा, गलत है तो कैच ब्लॉक आपको बताएगा हैंडलिंग सॉल्यूशन एंड देन यू हैव टू चेक दैट इनपुट एंड यू कैन करेक्ट इट. गॉट द पॉइंट? हाउ टू हैंडल रन टाइम एक्सेप्शन? Yes, ma'am. Now let me show you this example where we have covered arithmetic. Now this is a code, right? And what we have covered that okay fine, अगर किसी भी यूजर ने डिवाइड बाय 0 किया कोई भी नंबर को, that means number 2 is 0, then there will be problem. So you can see on this line we are able to see the exception now. So I will keep that line inside the try block. Quick result है ना? हम इसको try में लिखेंगे. Try को obviously catch के साथ define करो. And which exception it is throwing. If you know arithmetic, then just copy that class and just use the same. If you don't know, you can use parent exception, no problem. बस exception class लिखो, चलेगा, ठीक है? Now see, here I will write a handling solution for the user. Please enter second number, okay? Other than 0. Can I write this time? This type of message? लिख सकते हैं ना? Please enter second number other than 0. Or number should not be 0. I can write in this way. चलो एक simple message, number, check the number, it should not, और number is incorrect. कैसे भी जो आपको प्रिंट करना है लिख करो. Okay, check the number, number is incorrect और 0 is incorrect. मतलब एक मैसेज हम देंगे यूजर को, मीनिंगफुल मैसेज. ओके, चेक द नंबर, 0 नंबर इज इनकरेक्ट. चलेगा ना? यस. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स नाउ. एग्जांपल, सबसे पहले इफ यूजर हैज एंटर वैलिड नंबर,
No problem at all. Can I say 10, 10? No problem. You will able to see all the result. But one more time I'm executing the code. And this time, if user has entered some invalid data like 10 divided by 0, again, can you see? This time, you will be not able to see any exception. You will get a handling solution. Okay, check the number, 0 number is incorrect. And then user has to run this functionality one more time with a valid number. Are you getting my point? कैसे handle होगा exception? And same thing we do in real time also. गलती से ATM, okay, ATM machine आप use करोगे and pin number incorrect लिखा तो आता है ना incorrect pin number. And then you have to enter it one more time. In fact, on GPay also, whenever you are making payment, गलती से गलत अगर password लिखा तो आता है ना, your password is incorrect, pin is incorrect, and then you have to again resolve that issue, right? So that is called exception handling. ये पूरे program को terminate करेगा, but yes, this is the way you can handle the exception. Got the point? कैसे handling करोगे? Yes. So try catch is the solution to handle the exception. I'm going to comment it. Why? Because it will ask multiple time, guys. अब मुझे show करना है array example. So what is the problem? Can we keep it directly in the try block? The statement which is throwing exception, keep it in try. Just write catch. Okay. And if you know what exception it is throwing, generally in array, this is a common exception. Array index out of bounds exception. You have to keep it here. Okay. Let's say any object. And then what I can do, I can just write a meaningful message to the user. Please enter valid index. Simple. User will enter index and user will get the result. See, अगर user ने correct input enter किया है, no problem at all. Let's say if I enter 2, yes, you will be able to see the data. Correct. But one more time I'm executing, and if I enter something wrong, example, if I enter here 5, which is wrong. So in that case, previously we are able to see that exception, guys. But अब आपको मिलेगा solution that you will understand your mistake, and that you can again overcome that mistake and continue with the application. Okay, so now you're getting please enter valid index, correct? And then user will use the functionality and user will enter a valid index. So user will get the result. This is called exception handling. So pehla point, run time and compile time and how you are able to handle is the point is clear to all. Yes, ma'am. क्या होता है रन टाइम एक्सेप्शन, क्या होता है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, एंड कैसे आप इसको हैंडल करो. अगर आपको कोई भी कंपाइल टाइम एक्सेप्शन भी हैंडल करना है, यू कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम एट ऑल. एग्जाम्पल, अब ये पूरा कोड लेट मी कमेंट, ठीक है, एंड आई विल शो यू दिस पार्ट. ओके, सो दिस टाइम we are able to see that interrupted exception. I will be just removing this part, throw वाला part. ठीक है, एक काम करते हैं, let's keep and yeah, let's keep it, but I'll just comment it. Fine. And ये है exception. अब इसको handle करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना. You can just directly maintain try catch. Yes, absolutely. Just write that exception inside a try block. See. This is a block which is throwing exception and just put here catch block. अब ये throw करता है interrupted, तो लिखो interrupted exception, ठीक है, E. This will throw interrupted exception and then I will write, okay. Let's say अगर interrupted है तो basically अगर कुछ message print करना है तो वो प्रिंट करो. एक काम करते हैं, आई विल जस्ट प्रिंट अ मैसेज, ई डॉट गेट मैसेज, ठीक है. इधर आप इसको प्रिंट करो और कोई मीनिंगफुल मैसेज के साथ डिस्प्ले करो, इट डजंट मैटर, ठीक है, डन. सो व्हेन यू रन, सी दिस program start. Now after 3 seconds, I'm able to see the result because now this compile time exception handle with this particular interrupted exception and you are not able to see that, right? अगर आपने कुछ लिखा भी नहीं तो भी चलेगा, it doesn't matter. See, in compile time it doesn't matter because it is not able to you are not able to see this in a runtime, guys.
ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट आपका हैंडल होगा थ्रू द JVM. सो दैट्स द रीजन यू कैन डायरेक्टली थ्रो इट. और अगर आपको ये किसी मेथड को आपको ये एक्सप्लेन नहीं करना है कि चलो थ्रो इट, व्हाट विल हैपन कि अगर एक मेथड में कोई एक्सेप्शन थ्रो होगा एंड इफ यू आर कॉलिंग दैट मेथड, देन जहां पे कॉल करोगे उस क्लास में भी मेथड को एक्सेप्शन थ्रो करना पड़ेगा, एंड दैट इज द प्रॉब्लम. एग्जाम्पल सी, इफ यू नोटिस, अगर एक काम मैंने किया कि लेट्स से व्हाट आई विल डू, I'll create one method here in runtime exception. I will create a method. ठीक है, एक static method को यहाँ पे डिजाइन करते हैं. Public, let's say static void. ठीक है, message, ये message नाम का method है. But in message, this will throwing one exception. I will be writing here thread. Thread dot it slip. ठीक है, मैंने लिखा 2 सेकेंड का गैप. ठीक है, सबको पता है कि ये थ्रो करता है एक्सेप्शन. एंड अगर मैंने इसको थ्रो किया तो थ्रो कहाँ पे होगा, मैसेज मेथड में होगा. अब पॉइंट ये है कि ओके फाइन, बट सपोज आई एम कॉलिंग दिस मैसेज मेथड इनसाइड अ सेम क्लास और मे बी इन अदर क्लास, व्हाट विल हैपन, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मेथड वेयर यू आर कॉलिंग इट टू थ्रो दिस एक्सेप्शन. एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे कॉल किया, सपोज आई एम कॉलिंग नाउ मैसेज. ठीक है, what will happen, can you see you are getting error? क्यों? because message exception एक exception को थ्रो करता है, राइट? तो अब किस में आपने कॉल किया, मेन मेथड में आपने कॉल किया, तो मेन मेथड हैज टू हैंडल दिस एक्सेप्शन. किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंटरप्टेड एक्सेप्शन को हैंडल करना, मेन मेथड का. Main method. तो इफ यू सी मैसेज, अगेन यू आर गेटिंग सेम मैसेज ना कि दिस इज अनहैंडल एक्सेप्शन, व्हेन यू थ्रो टू द मेन तभी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा. तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि जो भी मैसेज और जो भी मेथड में आप इस मैसेज को और इस मेथड को कॉल करोगे, दैट एवरी मेथड हैज टू हैंडल इट. तो बेसिकली ये पार्ट हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं. अगर आप इसको ट्राई कैच से करोगे, सो यू डोंट नीड टू हैंडल इट. एग्जाम्पल, वन चेंज, इफ आई जस्ट हैंडल इट यूजिंग ट्राई कैच. अगर मैंने सिंपल लिखा, चलो वन मोर टाइम, ट्राई, see this beauty. Okay, today I'm taking some extra time, wait, catch. ठीक है, and I have to just write here that interrupted exception. Let me write quickly. ठीक है, okay, what will happen, are you able to see any exception through the message? नहीं आ रहा है ना. मैंने अगर कॉल भी किया, स्टैटिक है गाइस, तो विदाउट क्लास ऑल्सो यू आर एबल टू कॉल, नो प्रॉब्लम. बट आर यू एबल टू सी एनी एरर हियर नाउ? No. नहीं ना, क्यों? बिकॉज हमने इसको हैंडल किया यूजिंग ट्राई कैच. तो ट्राई कैच में यू आर नॉट आस्किंग एनी अदर मेथड टू हैंडल इट, यू आर हैंडलिंग इट विद इन दैट पर्टिकुलर कोड, विद इन दैट मेथड इटसेल्फ. इसलिए यहाँ पे कोई एरर नहीं मिला. बट अगर थ्रो करते हो तो जिस भी मेथड में कॉल करोगे उस मेथड को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है कि इस यहाँ पे जो भी एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है उसको थ्रो करने का. एंड जब मेन मेथड थ्रो करेगा तो ये हैंडल होगा बाय द JVM. I hope compile time, run time is clear. Yes or no? Yes, ma'am. तो concept ये है, people will ask you how many different keywords are available to handle Java exception. So guys, try, catch, you can see throw and throws. Finally, all these are what? All these are Java exception keywords. अब हमने cover किया है try, catch, throws. What about finally and what about throw? Let me explain these two more keywords. Okay, I'm just extending session today because I don't have 9 PM batch today, and that's the reason I'm extending this session. Okay, so please just wait for only 10-20 minutes more so that we will complete the topic, and from tomorrow we will good to go with Selenium, guys. Is that okay? Yes, ma'am. Okay, now see what is finally. Generally finally it is a block. ठीक है, पहला पॉइंट, फाइनली क्या है? तो फाइनली एक ब्लॉक है, इट्स नॉट लाइक अ कैच मेथड, रिमेंबर. तो फाइनली ब्लॉक में, like this block you cannot write directly in the code, you have to write this block using or with the help of try block. Okay, but what is the purpose of finally?
Generally, finally is not used for exception handling. Finally is a block. Suppose somewhere in the project, अगर कुछ कॉमन कंसेप्ट है जो आपको रन करना है, ओके, विदाउट मैटर like whether there is exception in the class or whether there is no exception in the class, still you want to run something which is constant, then you can implement with the help of finally. मतलब मैंने कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में मैंने क्या किया है, कुछ मेथड्स को डिजाइन किया है, एंड गाइस एवरी प्रोजेक्ट रिक्वायर्स सम काइंड ऑफ डेटाबेस, है ना, सम काइंड ऑफ सेटअप, जैसे रिपोर्ट सेटअप एंड ऑल, एंड सर्वर सेटअप समवेयर. तो व्हाट आई वांट, अगर मेरे प्रोग्राम में और अगर मेरे पूरे सॉफ्टवेयर में कुछ एरर है, कुछ एक्सेप्शन है, स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग व्हाट, कि एट द एंड whenever I'm closing it or whenever any exception occur, automatically my server should close, automatically my database connectivity should close. So where you will maintain that code, कुछ भी हो, एक्सेप्शन हो या ना हो, तो भी मुझे कोई चीज है जो कांस्टेंट रन करना है, फिक्स रन करना है, कि चलो कुछ भी हो जाए प्रोजेक्ट में, डेटाबेस सर्वर ऑटोमेटिकली क्लोज होना चाहिए, प्रोजेक्ट क्लोज होना चाहिए. तो दो स्टेटमेंट्स वी विल मेंटेन इन द फाइनली ब्लॉक. तो नेम हैज अ मीनिंग, फाइनली मतलब फिक्स स्टेटमेंट. डजंट मैटर इन योर कोड whether your exception, you are having any exception or you are doesn't having any exception, still this block will run. तो इतना याद रखो, फाइनली कभी एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करता, ये अलग पर्पस के लिए अवेलेबल है प्रोग्रामिंग में. तो लेट मी कवर दिस, व्हाट इज ट्राई फाइनली. तो आई विल बी गिविंग यू वन डेमो ऑन फाइनली ब्लॉक. जस्ट ऑब्जर्व, दिस इज नाउ फाइनली ब्लॉक, ठीक है, एंड जस्ट ऑब्जर्व, कंसीडर नाउ. Okay, I'm writing a statement here. Let's say I'm just writing system out println, and suppose I'm writing 9 divided by 0. Okay, which exception you will get? Arithmetic. Exactly, arithmetic. Very good. चलो एक काम करते हैं, मैसेज भी देते हैं, ठीक है. This is my first message. Let's say program starts. Okay, and okay, and one more message I will write, program ends, ठीक है. And in the middle I have written one statement. Definitely this statement will throw us exception, and that will be compiled, run type, है ना. तो run करो, you will able to see that. Okay, I got the exception, कि चलो fine, exception है तो आगे का program run भी नहीं होगा. See, you are not able to see program end statement. And where you are getting this exception, it is coming on line number 9, and see this is the exception, arithmetic exception. Okay, अगर मैंने इसको copy किया, and if I maintain it, let's say I know how to handle, let's say try, तो हम लोग try में लिखेंगे इस statement को, ये टेक्निक हमें सिखाया, राइट. तो हम लोग इसको लिखेंगे fine, but instead of catch I'm using finally. Which block? Finally block. Okay. And in this finally block, in fact, we don't require that arithmetic exception class name also, right? Here, I'm writing one statement. Suppose example, मुझे लिखना है कि the task is completed. ठीक है? Task is completed. मैंने एक simple message लिखा. तो will this program handle this exception? Definitely not. अब एक्सपेक्टेड है कि आपका एक्सेप्शन हैंडल होना चाहिए ना, बट आपने तो फाइनली लिखा है, तो फाइनली कभी एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेगा. व्हाट फाइनली विल डू, अगर आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन है तो इट विल थ्रो द एक्सेप्शन, आई मीन यू विल ऑटोमेटिकली गेट दैट एक्सेप्शन इन द कंसोल, बट आफ्टर एक्सेप्शन विच पार्ट इट विल रन, फाइनली विल कॉन्स्टेंटली रन. देखो, अगर मैं सेम प्रोग्राम को रन करूंगी तो यहाँ पे कोई हैंडलिंग नहीं होगा. कैन यू सी, आपका फाइनली ब्लॉक रन हो रहा है along with exception. Can you see? See the message. The task is completed. I am getting. It doesn't matter कि exception है नहीं है, तो भी ये statement execute होगा, right? चलो एक काम करते हैं. 9 divided by 3. You will get exception? No, right? Mm. You will get a result. You will get a result. Example. अब क्या होगा देखो. अब अगर आपने नोटिस किया, फिर से रिजल्ट भी आ रहा है, फाइनली भी रन हो रहा है, एंड आपका स्टेटमेंट भी आ रहा है ना.
Everybody, is the point is clear to all? Yes. तो finally का काम handling नहीं है. How you will handle the code or exception? If there is exception in the program, always remember you have to handle it through the catch block. So can I write both together? Yes, absolutely. No problem at all. Just maintain catch block along with the try. Catch may obviously as per the rule. Yes, as per the rule, you have to pass a class name along with that object reference. And then you can write, okay, fine. Please, let me write, please select number other than 0, whatever it is. जो आपको लिखना है लिख सकते हो. ठीक है, डन. इस बार क्या होगा? If this statement is throwing exception, it will execute catch block along with finally. Are you getting my point? तो finally कुछ भी हो, finally run होगा. Can you see? This time I'm getting handling solution along with finally, along with my last step. So what is the purpose of finally block? How you will explain? तो guys ये information मैंने already PPT में maintain किया है. Just follow the notes. See what is try, catch and try finally. The syntax is available here. Majorly try, catch हम follow करते हैं run time handle करने के लिए, exception handle करने के लिए. Throws आप use करोगे compile time exception handle करने के लिए. And see, somewhere people will ask you, explain any 5 Java exceptions, guys. तो एटलीस्ट ये याद रखो, जावा में कौन कौन से एक्सेप्शंस अवेलेबल है, राइट? अरिथमेटिक, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्लास नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड, IO exception, interrupted, no such a field exception. All these are coming from Java. And see the difference. What is finally block? Here you can see the difference. Finally, it is a block. It is used to place an important code. Whatever important code is there now, that you can keep inside a finally block, and that will run definitely. And it will be executed whether exception is handled or not. Matlab, it doesn't matter whether your program is throwing in exception or whether your programming is not throwing in exception. Still, whatever you maintain in the finally, it will run. But one more question. Can I only maintain finally? मैंने सबको कमेंट किया and मैंने बस finally लिखा. ऐसे लिख सकते हो क्या आप लोग? No. In this way, you are not able to write, guys. Always remember, finally, हमेशा आपको लिखना है try block के साथ. Is the point clear? That is a syntax, guys. Basically, finally आप directly maintain नहीं कर सकते, तो you are getting syntax error here, है ना? अब ये syntax error को handle कर पाओगे क्या? नहीं. क्या करना पड़ेगा? You have to use a syntax. Got the point? तो एरर मोस्टली रिकवरेबल नहीं होते हैं, हम उसको हैंडल नहीं करते, जनरली हम उसको कवर करते हैं. आई मीन यू हैव टू कीप अ सिंटैक्स एंड देन यू आर एबल टू सी दैट एरर गॉन. गॉट द पॉइंट? तो फाइनली इज अ ब्लॉक दैट यू कैन ऑलवेज मेंटेन विद अ ट्राई ब्लॉक. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अब इसमें एक और है, देयर इज अ थ्रो कीवर्ड. ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ थ्रो? थ्रो विल नॉट हैंडल एनी एक्सेप्शन, ठीक है, बट थ्रो डेवलपर क्यों फॉलो करते हैं? जैसे एग्जांपल, व्हाट आई वांट टू डू एज अ डेवलपर, सपोज एज अ डेवलपर आई जस्ट वांट टू लेट्स से डिफाइन अ न्यू एक्सेप्शन. मुझे कोई नया एक्सेप्शन जनरेट करना है, डिफाइन करना है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर दैट यू कैन यूज थ्रो. थ्रो विल थ्रो द एक्सेप्शन जनरली फॉर कस्टमाइज पर्पज. मतलब कस्टमाइज, ओके, कस्टमाइज पर्पस के लिए. मतलब आप इसको बोल सकते हो कि अगर आपको खुद का कोई एक्सेप्शन डिजाइन करना है, तो फॉर कस्टमाइज पर्पस वी कैन यूज थ्रो कीवर्ड. तो थ्रो इज जस्ट अ कीवर्ड लाइक अ थ्रोस, बट दोनों में क्या डिफरेंस? थ्रोज ये जो कीवर्ड है, आप मेथड सिग्नेचर के साथ लिखते हो ना. मतलब अगर M1 मेथड है तो इसके साथ में लिखूंगी थ्रोज एंड देन एक्सेप्शन नेम. बट थ्रो हम हमेशा लिखते हैं मेथड के अंदर, याद रख. थ्रो को लिखना है inside a method. Throws will always with method signature. And throws will obviously handle compile time exception, but it is not able to handle, generally it is able to customize the exception. कोई नया exception generate करना है तो आप इस कीवर्ड को यूज करोगे. कैसे? चलो एक exception डिजाइन करते हैं. See, I will be creating one more class.
दिस इज थ्रो कीवर्ड एग्जाम्पल, ठीक है, थ्रो कीवर्ड डेमो एंड जस्ट ऑब्जर्व. नाउ सपोज जैसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन सबको पता है, सिमिलर काइंड ऑफ एक्सेप्शन मुझे डेवलप करना है, क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे? ओके, दिस इज जस्ट अ टॉपिक दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सी, आई एम डिजाइनिंग वन मोर टाइम स्ट्रिंग s1 इट इज इक्वल टू नल. ओके, सबको पता है इसका मतलब, अगर ये s1 नल है तो ये थ्रो करेगा एक्सेप्शन, मुझे ये बताना है, ठीक है. और कौन सा एक्सेप्शन देना है, तो लेट्स सी. I just want to define here one condition. If s1 dot equals, okay, equals with what? Null. अगर s1 null है तो मुझे बताना है कि please throw one exception. कौन सा exception? तो मुझे लिखना है okay fine, string is null. I'm just designing string is null. But the point is आप इसको directly throw नहीं कर सकते. You have to write exception. Okay, and what exception it is? This is new exception. Throw new exception that string is null. Are you getting this point? Up, let's see. Again, let me do one thing. I'll just put it in the bracket. Let me check how we can maintain this exception. Okay, and can I write in this way? What is happening? Yes, I can design in this way, that throw new exception. And कौन सा exception? तो मुझे एक message देना है string is null नाम का exception. Okay, but what is happening? Internally, it is throwing one compile time exception, guys, right? If you see this exception class, it is asking you unhandle exception type exception. अब इसको handle कैसे करोगे? Now they're asking you to throw. अगर मैंने throws किया तो ये throw करेगा exception class. That's fine. What we can do this time? Just run and see the result. Can you see? I'm getting here null pointer exception cannot invoke. अच्छा, cannot invoke object because s1 is null. Wait, यहाँ पे हम क्या करेंगे? I just want to let's do one thing. इसको handle करते हैं using try catch, so that we will able to see something. Okay, but this time what is happening? S1 it is not. We are getting exception on which line? Let me check on line number 8. Okay, so if I just throw this exception and if I keep this part in the try block, because it is throwing me that object is null exception, right? And I will be just designing catch. Let's say I will be designing here exception, what it will throw this time. And I will just write e dot print stack trace. Let's see, something you should get here definitely. Okay, I'm again getting it's a null pointer. So I'll do one thing. Okay, this is a new exception. Let me try. Still it will not invoke. Yeah, I'm getting something message. Okay, let me just correctly write. This is new exception, but again I'm able to see that null pointer. It should throw that string is null. Wait, I'm getting only s1 is null. तो ये हमें जावा का एक्सेप्शन दे रहा है. एक काम करते हैं. I'll change the signature one more time. Let's do one thing. I'll just copy and let me change everything. Suppose if this time I'm comparing with primitive, like s1 it is equal to null, it is equal to null, and this time if it is null, then it should throw this exception, and this time I will comment this part. तो ये मुझे throw करेगा, and let me just define here try catch, because now you are not able to see an exception at the null pointer exception करके, right? अब इसको handle करते हैं. And suppose here in the catch I will be designing that exception e, and here I will be designing e dot print stack trace. मुझे बस आपको show करना है कि कैसे ये message आप create कर सकते हो, generate कर सकते हो. Let's see. Yeah, can you see this time? You are getting ना? हमें predefined exception को नहीं देखना था. Are you understanding? क्यों मैंने change किया code? Yes, everybody.
I want to show you कि whatever message I have written, how I'm able to throw that message along with exception, guys. So see, this time I have generated which exception? Parent exception, correct? Name of exception is exception itself, and the message is string is null. And you can see this we are getting on line number 10. Got the point? तो 10 नंबर लाइन मतलब ये वाला लाइन, बिकॉज यहाँ पे मैंने थ्रो किया है a particular exception. So is the concept is clear to all? What is throw keyword, what is try catch, and how you are able to handle it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो these many examples you can prepare in exception handling, right? And you can see one more important question. People will ask you in Java, what is difference between final, finally and finalize? अगर आपको याद है तो हमने ये टॉपिक कवर किया है फाइनल कीवर्ड, है ना? व्हाट इज दिस फाइनल कीवर्ड? फाइनल एक कीवर्ड है, फाइनली एक ब्लॉक है, याद रखो, ये एक्सेप्शन में हम फॉलो करते हैं, एंड फाइनलाइज इट इज अ मेथड, ठीक है? तो फाइनल कीवर्ड का पर्पस क्या है कि इफ यू यूज दिस कीवर्ड फॉर एनी वेरिएबल, that variable data will be constant and you guys are not able to use that data. Remember, I mean you are not able to change that data, that will be fixed. अगर final keyword method में use करते हो तो that method you cannot override. अगर final keyword कोई class में follow करोगे तो that class no other class will become a subclass for that class, correct ना? कोई दूसरा class उस class को extend नहीं कर सकता. The final demo we have already covered, if you remember. Finally block, today we have covered any special code, any constant code if you want to maintain, that should be fixed or that will execute fixed without matter in your code if there is exception, if there is no exception. तो हम use करेंगे finally block. And what is finalize? Guys, finalize ये method जो है ना, it is called by garbage collector. ओके अभी क्या है देखो, इफ यू रिमेंबर हमने जेवीएम का स्ट्रक्चर देखा था कि जेवीएम में 3 पार्ट्स होते हैं, क्लास लोड एरिया, दिस इज अ स्टैक ट्रेसिंग के लिए, एंड दिस इज द मेन पार्ट हीप एरिया ऑफ द जेवीएम. इनसाइड अ हीप देयर आर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स गॉट क्रिएट, ठीक है? एट सम पॉइंट व्हाट विल हैपन, सपोज हीप एरिया विल बी फुल, देन who will remove this object? Suppose this is not required, this is not required, this is not required, and currently active are only 3 objects. So who will remove this object? Guys, ये आपको मैन्युअली करना नहीं पड़ेगा, it is done by JVM. So JVM internally called garbage collector. What is garbage collector? Garbage collector will check the object, those are not important, those will be removed by the garbage collector. But internally, what the garbage collector will do? It will call first method. That method is called finalize method. What is the method beauty? Finalize method first clean the object. मतलब जो भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, रिमूव करना है, उसको क्लीनिंग का काम कौन करेगा? फाइनलाइज मेथड करेगा, राइट? पहले क्लीन होगा ऑब्जेक्ट, रिमूव होगा एवरीथिंग फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट, एंड देन कलेक्टर will directly delete that object from that heap area of the JVM. Are you getting my point? तो finalize किसके लिए यूज होता है? To clean the object. See, it is a method and it will use to perform cleanup processing before the object is garbage collected. Are you clear? What is finalize? तो गाइज ये मेमोरी मैनेजमेंट है ना इंटरनली, विच इज हैपन बाय द जेवीएम ओनली, हमें मैन्युअली करना नहीं पड़ता. दैट इज द रीजन जावा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बिकॉज अगर आपने सी को फॉलो किया तो मेलॉक केलॉक ये फंक्शंस है जो हमें फॉलो करना पड़ता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. वॉट एवर अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स विल बी देयर, दोज विल बी क्लीन बिकॉज ऑफ फाइनलाइज मेथड, एंड इट इज अ प्रोसेस ऑफ गार्बेज कलेक्टर विच इज कॉल्ड बाय जेवीएम, not manually. Got it? So read and prepare this difference. You can prepare throw and throws also. दोनों में क्या difference है देखो and इसको prepare करो. That throw will help you to simple throw the exception. Throws will help you to declare exception, right?
थ्रो आप जनरली कस्टमाइज करने के लिए फॉलो कर सकते हो एंड दैट यू हैव टू मेंटेन विद इन अ मेथड, बट थ्रोस आप मेंटेन करते हो विथ मेथड सिग्नेचर. थ्रो कैन ओनली थ्रो वन एक्सेप्शन एट अ टाइम, बट थ्रोस कैन थ्रो multiple exception at a time. Got the difference? Here we have completed Java exception topic. Yeah, I have extended a session little bit more. I mean, complete half hour. But are you clear with the topic, everybody? Yes, ma'am. Okay. कल का recording I guess मैंने share नहीं किया है because I was busy in the morning slot. तो guys please wait. I will share you immediately. ठीक है, कल का recording पहले आपको share होगा. And ये जो recording है let me upload and then I will be able to share you same recording tomorrow morning. Okay. And please do not miss the session because हम कल start करेंगे Selenium WebDriver concept. Fine. So this is all about exception handling. These many inner details you should know and then you are able to crack the interview for Java. अगर Java interview crack करोगे automation easily crack होगा. Remember, okay? All the best. Then we will stop the session here and we will continue rest of the topics again from tomorrow. And tomorrow we are going to start with Selenium WebDriver. So please do not miss the session. Bye everyone. Take care. Good night. Bye. Good night, Bye, ma'am. ma'am. Good night. Thank you.